Simple daily rituals to cultivate deep happiness is your own company. क्या आपने कभी अपने आप को सेफ स्पेस बोला है? Staying alone is powerful. Staying alone is freedom. आप सोचते हैं कैसे? ऐसा क्या करें कि यू एम्पावर योर सेल्फ? सबसे तो पहले है यू जस्ट मेक योर मॉर्निंग साइलेंट. आप जब सुबह उठते हैं ना, देयर इज़ नो रश. किसी चीज़ की जल्दी नहीं है. आराम से सिट डाउन क्वाइटली, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. नो मोबाइल फ़ोन अराउंड, दूर रखिए उसको. यू, योर एनर्जी, योर थॉट्स. ब्यूटिफुल मॉर्निंग, इतना अच्छा ब्रीज. Sit there. A quiet morning. Sometimes you can just watch the sunrise and just have a conversation with the universe and you, or you can have a conversation with yourself. एक और चीज़ है सुबह की, उसमें जैसे कई लोगों को जो इनको चाय पीने की आदत है ना, वो तो बिना चाय के तो भैया उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी. तो आप ना, सूरज जब उगता है तो आप उसको सिप करिए एंड वॉच द सनराइज. मॉर्निंग इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एक्सरसाइजिंग. यू कैन हैव अ गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज. यू कैन हैव सम फिजिकल एक्सरसाइज. और सनलाइट में हल्का सा वॉक करना इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी. नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज when you decide to take a morning walk, always remember one thing. जब आप अकेले चलते हैं ना, आपके कई कई बार आप सोच रहे होते हैं. आई विल से थोड़ा सोचिए. इट ब्रिंग्स अ क्लैरिटी इन योर वे ऑफ थिंकिंग. एंड अदरवाइज you start enjoying your own company because you are in conversation with yourself. When you walk, you walk without missing anything. ऐसे नहीं कहते हाय पता है वो उसका ख्याल किसी का नहीं. आप सिर्फ यू आर ऑब्जर्विंग द नेचर, द हाउ द क्लाइमेट इज, ब्रीज, यू, योर थॉट्स एंड जस्ट वॉकिंग. देन ऑफ कोर्स कभी आपने मील खाई है बिना स्क्रीन को देखे हुए? Most of us, या तो हम, while eating, we are watching a television or, we are watching a mobile phone. एक बार ना स्क्रीन को दूर रख के खाना खा के देखिए. आराम से खाइए, धीरे खाइए. You will realize that, जब आप खाना बहुत, सोच समझ के खाते हैं, च्यू बार बार करके खाते हैं, you start noticing your own thoughts. Of course, then you also have to create something just for yourself. Taking your, taking or going for a walk, you read any page, or you listen to music, or take photographs. All these things that you do, they are actually very important for you as a person. In your quiet time, you just give yourself just 10 minutes of quietness. Initially it may feel uncomfortable कि जिसको इतना बात करने की आदत है उसे बोलो आप 10 मिनट चुप रहें. But gradually you will realize that you start enjoying it because there are thoughts you speak to yourself. You can always begin the day or end the day with gratitude. Always remember that, आपको grateful होने के reasons बहुत हैं. It could be a cup of tea, a conversation, a peaceful drive, a healthy body. कितने सारे reasons हैं. And I will just say that, sometimes your own company, when you are in your own company, you really enjoy.
You can go on a solo date, you can go for a walk, you can eat alone, you can travel alone, you can read, reflect, create, rest alone. And you will realize that being alone isn't emptiness, it is freedom in the true sense.